आपने ये तो सुना होगा कि अमेरिका में हर दूसरी शादी की आखिरी मंजिल तलाक होती है। In other words, half of the marriages in United States they end in divorce. So what does this tell us about Americans? Perhaps Americans are highly independent or their compatibility levels they are very low. On the other hand, इंडिया में पार्टनर्स 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि डेटिंग और बेंचिंग के जमाने में ये सीमा आंटी कहाँ से प्रकट हो गई? So let me tell you guys, the cost of your next iPhone could increase exponentially, and your exporter uncle का दीदार friend will soon come to you and beg you to lend him some money. And all thanks to this man, Donald Trump. इस एक आदमी ने, माफ कीजिएगा, His Majesty Donald Trump, the President of United States, इन्होंने कसम खा ली है कि अमेरिका का डिवोर्स सारी कंट्रीज से ये करा के ही दम लेंगे। And because of Trump's erratic behavior and constant threats, India's friendship and alliance with the United States has come under strain. Trump had already announced 25% tariffs on Indian imports and has now announced additional 25% duty, taking the total to now 50%. He is threatening India to stop buying oil from Russia. After weeks of strategic silence, India's foreign ministry showed the mirror to Donald Trump and reminded him that his own country is buying uranium from Russia. When asked, Donald Bhai said that he has no idea about it and he will have to check. And after the additional 25% tariff was announced, India said that all the necessary actions will be taken to protect its national interest. Prime Minister Narendra Modi is already emphasizing on buying Swadeshi and making the country Atmanirbhar. So दोस्तों, when a marriage comes under strain, रिश्तेदार तो प्रकट होते ही हैं। हाँ, माना डिवोर्स में इतना तामझाम नहीं होता और कोई जश्न नहीं मनाया जाता, कोई मंडप नहीं होता, बट रिश्तेदार वो तो फोन करेंगे ही। So in the strategic geopolitical game of chess, Donald Trump has inadvertently pushed Russia, China, India and Brazil together. BRICS पढ़ा होगा ना हिस्ट्री बुक्स में। Brazil's President Lula has already said that he would rather call Indian President and the Chinese President instead of making a call to the United States President Donald Trump. और रशिया तो भाई पहले ही बोल चुका है that every country has a right to choose their own trading partner. Finally, our Prime Minister Narendra Modi has also decided to visit China end of this month, and this will be Modi ji's first visit to China since the deadly clash between Indian and Chinese soldiers in 2020. यहाँ तक पिक्चर समझ आई? Let's recap it in very simple words. Trump wants India to allow import of cheap agricultural products. India ने कर दिया मना, so Trump announced 50% tariffs or taxes on Indian imports. ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर दो. So what does this mean about India and US relationship? Is that over? इतना सिंपल नहीं है दोस्तों. हम हिंदुस्तानी हैं और हम रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं. Interests of both India and the United States are interlinked, and a trade deal in near future cannot be ruled out at all. बस रिश्तों की खटास दूर होने में थोड़ा सा वक्त तो हर जगह लग ही जाता है. And after all, better sense prevails in half of the marriages, even in United States. दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में जानना चाहते हैं या देश और विदेश की कोई भी खबर आपको दिल से बहुत परेशान कर रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए. और हाँ, सिंपल दृष्टि को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. जल्दी से बेल आइकन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम.